Hello friends, this is Agar Jaswal. Welcome back to my channel, and today we will analyze one of the battery and energy stock. This is Amara Raja Energy and Mobility Limited. If we look at the market cap of this company and some financials, so market cap is around 17,422 CR, current price is 952, stock P is very attractive, is 21.6, book value is 425, ROC is 16.8%, return on ROE is 12.3, and if you look at some history of this company, so Amara Raja Battery Limited is the flagship company of the Amara Raja Group, is the technology leader and is one of the largest manufacturer of lead acid batteries for both industrial and automotive application in the Indian storage battery industry. ARBL has prestigious OEM as its clients. The company industrial and automotive batteries are exported to over 50 countries across the globe. In India, Amara Raja is the preferred supplier to major telecom service provider, telecom equipment manufacturer, UPS sector, Indian Railways and to power, oil and gas among other industry segments. Termination of shareholding agreement tie-up with Johnson Controls. If you look at some key points, business segment, lead acid battery 96% in Q3 FY25 versus 98% in FY23. Automotive battery is the leading player in the Indian battery industry, known for its popular Amara brand. The country's largest selling aftermarket automotive battery brand. It is the largest exporter of automotive batteries. It manufactures batteries for 2 watt, 3 watt, 4 watt and commercial vehicle. Brands include Amara, PowerZone and E2. It serves customers including Maruti Suzuki, Tata Motors, Hyundai, Honda, Eicher, Mahindra, Ashok Leyland and many more. Industrial batteries, it is pioneer in manufacturing valve regulated lead acid batteries in India, offering a wide range of industrial batteries catering to various segments like UPS, telecom, railways, etc. It is a market leader in the telecom sector and the largest exporter of VRLA batteries. Brands includes PowerStack, Amara Sleek, Amara Volt, Amara Brute, Amara Quanta and Leon. It serves customers including Indus Tower, BSNL, Airtel, ABB, Infosys, Indian Railway and many more. New energy business 4% in Q3 FY25 versus 2% in FY23. The company forayed into the new energy business in 2022 to offer lithium-ion cells, battery pack solution and chargers for electric vehicles and beyond. It has developed India's first 21,700 cylindrical cell. Its customers include Piaggio, Mahindra, BSNL, Indus Tower. Market share, aftermarket 33 to 34%, aftermarket 2 watt 35 to 36%, industrial 57 to 58%, UPS 42 to 43%, inverters 10 to 11%, 2 watt OEM 25%. Distribution network, the company is in 50 countries including the Middle East, North America, Central America, Africa, Southeast Asia and Oceania. In India, it has 23 branches, 39 distribution points, 550 Amara franchisee and 1 lakh plus point of sale. Geographic split, domestic 88%, export 12%. Manufacturing facility, the company has several lab manufacturing plants in 2 locations and 2 packaging facility in the new energy business. Lab capacity, automotive 55 million units, industrial 2.3 billion AH, NEB, mobility 1 gigawatt, stationary 1 gigawatt. And capacity expansion, Gigafactory, the company is setting up a Giga Corridor project in Divitipalli, Telangana, or advanced chemistry cell manufacturing and battery pack assembly with capacity up to 16 gigawatt and 5 gigawatt respectively. It has signed an MOU with the Telangana government for the total planned capex of 9,500 crore over the next 4 to 5 years. The Gigafactory for NMC is expected to start operation from the beginning of 2027. Lead recycling plant, the company is setting up a lead recycling facility with the capacity of 1.5 lakh MTPA in Cheyyar, Tamil Nadu. Phase 1 with a capacity of 0.5 lakh MTPA was commenced in December 24, while battery breaking is expected to commence from Q1 FY26. Tubular battery plant, the company is setting up a tubular battery plant in Chittoor
of 1 million battery capacity commencing from Q1 FY26. The total capex spent in Q1 FY25 is around 600 to 700 crore, and in FY26 is expected to around 1000 crore. Fire accident. The company lost 1.8 million tubular battery capacity in fire on January to 31, 23. The affected unit generated rupees 700 crore revenue in FY22 and rupees 438 crore loss was recognized in FY23. The plant was fully insured with the rupees 275 crore received in claim to debt. Environmental issue in 2021. The Andhra Pradesh Pollution Control Board ordered the company's Chittoor and Tirupati plants to be closed. The company appealed to the Andhra Pradesh High Court, which extended the interim suspension of the closure order until further notice without specifying any end date. Tie-up in December 24, the Hyundai Motors India decided to equip its domestic product lineup with Amarons Made in India AGM absorbent glass matte battery technology in Q4 FY25. In August 24, the company signed an MOU with Piaggio Vehicles to develop and supply LFP lithium iron phosphate lithium ion battery cells and chargers for its electric vehicle. With the planned 16 gigawatt capacity gigafactory, the company aims to secure at least a 16% market share by 2030. And if you look at some financial of this company, the P is around 20. And if you look some peer comparison में अगर हम Amara Raju को देखें, is on the 8th position on the market cap and P is on the lowest side. और हम इसको क्वार्टरली रिजल्ट को क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर कंपेयर करते हैं तो सितंबर 25 में 3136 के आसपास की सेल थे. नाउ इट्स ऑन द 3388 3350 ऑन जून 25. दो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों अपने हायर साइड पे हैं. ऑपरेटिंग प्रॉफिट 441 से 406 एंड 387 से 406. ईयर ऑन ईयर थोड़ा कम है लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर इज ऑन द हायर साइड. नेट प्रॉफिट एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस 224 से 406, 261 से 406 एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ऑन ईयर दोनों हायर साइड पे है. नेट प्रॉफिट इस 245 से 302 एंड 194 से 302 इस एंड नेट प्रॉफिट इज ऑन द ऑल टाइम हाई. अर्निंग पर शेयर की बात करें तो अर्निंग पर शेयर इज 16.52. सेल्स, इफ यू लुक एट द सेल्स is all TTM is all time high 12,876 CR. Operating profit is already approx all time high. Not net profit की बात करें तो net profit is 974 all net 975 is almost all time high के आसपास बैठा हुआ है ये. Earning per share is 53.27. बैलेंस शीट, अगर हम इसके बैलेंस शीट को देखें तो इक्विटी कैपिटल इज अराउंड 18 CR. रिजर्व इज ऑल टाइम हाई 7763 के आसपास है. करंट वर्किंग प्रोग्रेस इज 541 CR. एंड रेशियोज़ की बात करें तो डेटर डेज जो है ये अभी थोड़ा सा कम होता हुआ नज़र आता है. इन्वेंट्री डेज इज़ 88 डेज. पेबल जो ये साइकिल की बात करें तो इज़ 77 डेज राइट नाउ. वर्किंग कैपिटल इज़ 34 डेज. ROCE जो है करीब 17% के आसपास नज़र आता है. प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है 2022 के बाद हमें ये बढ़ता हुआ नज़र आता है. नाउ इज 32.86. FII 17.97 जो पिछले कुछ क्वार्टर से कम होता हुआ नज़र आता है. DIIs के पास इन्होंने अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न बढ़ाया हुआ है. पब्लिक के पास सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग है 32.93 के आसपास. टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल चार्ट पैटर्न अगर हम इसको ट्रेडिंग व्यू पे एनालाइज करते हैं तो दिस इज इट्स ऑल टाइम हाई और the stock is already available at 46% discount from its top. और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इसके कुछ फाइनेंशियल्स और इम्प्रूव होंगे तो ये स्टॉक ट्रेडिंग रेंज है, इस रेंज से ही बाहर निकलेगा. और इफ़ वी एनालाइज द स्टॉक ऑन ग्रोक तो लेट्स सी व्हाट ग्रोक इज सेइंग.
स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो CAGR 1 ईयर में -26% है, 3 ईयर में 14% है, पिछले 5 साल में 0% एंड 10 ईयर्स में 1% है. The stock has faced downward pressure in 25 due to muted growth, regulatory provision, and market correction in the auto ancillary sector, but it remains above its 42-week low. रेवेन्यू की बात करें तो 12,886 करोड़, नेट प्रॉफिट 944 करोड़, बिट्टा मार्जिन अप्रॉक्स 12 से 13% के आसपास है, डिविडेंड यील्ड 1.10%, डेट टू इक्विटी 0.02, नियर डेट फ्री, प्रोमोटर होल्डिंग स्टेबल है 32.86, इंस्टीट्यूशन होल्डिंग DII 16.23, FII 17.97. The company has shown steady but moderate growth with sales CAGR of 14% and net profit CAGR of 22% over 5 years. की रेशियोज़ की बात करें तो PE रेशियो अगर हम देखें तो इंडस्ट्री एवरेज 31.6 है, इसकी 19.3, PB अभी इंडस्ट्री एवरेज अवेलेबल नहीं है 2.4, ROE 12.3 एवरेज, और इंडस्ट्री एवरेज 15 to 20% है, ROE 16.8, इंडस्ट्री एवरेज 18 to 22%, EPS 49.24, डेटर डेज 34, इन्वेंट्री टर्न अराउंड डेज 88 के आसपास है, इम्प्रूव्ड वर्किंग कैपिटल. प्रोस की बात करें, ये डेट फ्री बैलेंस शीट, रिड्यूस वर्किंग कैपिटल नीड्स एंड कंसिस्टेंट डिविडेंड. कॉन्स, लो ROE over recent years and flat institution volume due to tariff. Recent quarterly result is good right now. and हम एनालिस्ट व्यू की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल इसके न्यूट्रल व्यू है, इनका टारगेट 940, जियोजीत बाई टारगेट 1160, आनंद राठी होल्ड, शेयर खान बाय. एंड रिसेंट न्यूज़ एंड डेवलपमेंट की बात करें तो इन्वेस्टर मीटिंग, वर्चुअल मीटिंग विद सिस्टमैटिक शेयर्स ऑन December 2, 25 in person with Abbott Capital. Award recognized as Hero Sustainability Leader by Hero Motocorp. Strategic moves, 350 crore infused into advanced cell tech. 95 billion capex plan over 10 years for EV storage and solar. Industry ties, new VP appointment in Indian Battery Manufacturer Association. मार्केट सेंटिमेंट ऑन X की बात करें तो हाईलाइट्स Q2 ग्रोथ इन न्यू एनर्जी, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर विजिबिलिटी एंड इंक्लूजन इन ऑटो इंडस्ट्री ऑनशनरी वॉचलिस्ट, सम नो टैरिफ इम्पैक्ट ऑन US एक्सपोर्ट बट प्रेज कम्पिटिटिव प्राइस. रिस्क एंड रेगुलेशन की बात करें तो रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, हाई EPR टारगेट कुड एड 35+ crore in provision annually. Competition, intense rivalry in telecom and EV batteries, lithium supply chain vulnerabilities, growth dependency, reliance on lead acid 95% revenue, slow transition on lithium may lag if we EV adoption delay. Valuation की बात करें, stock down 26% YTD, further downside if margin don't recover on and grow or global macro auto sector slowdowns. Conclusion की बात करें तो Amara offers a balanced play on India's energy transition with a strong legacy in batteries and aggressive lithium-ion investment. At PE of 19.3, it's attractively valued for long-term investor betting on EV growth, but near-term headwinds like provision and flat exports warrant cautions. Potential catalysts include gigafactory progress and margin recovery. Monitor Q3 and Q4 for new energy attraction. हम इसके चार्ट पे अगर वापस आते हैं तो मुझे यहाँ पे the stock is trading at this level from long term. इस लेवल पे ये पिछले करीब ये पूरे साल फरवरी से लेके अभी तक नवंबर तक पिछले 10 महीने से यहाँ पे ये ट्रेड करता हुआ नज़र आता है. एंड फॉर बेटर डेज अहेड, और आने वाले टाइम में ये इसके स्टॉक के फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स अच्छे होंगे. और थैंक यू. दिस साइनिंग आउट, सागर जायसवाल. थैंक यू.